Friends, Indian polity. In our previous class, we were discussing the aspects of the preamble, and we discussed that our preamble essentially comprises of 9 ideological or doctrinal elements या components. First, sovereign, socialist, secular, democratic republic, and ये 5 हो गए, sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure for its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the country, equality of opportunities and of privileges, and to promote among them all. So in our previous class, we discussed the first 3 concepts, that is sovereignty, sovereign, secular, and socialist. Then we come to democracy, the 4th aspect of our preamble, which merits, components of the preamble. Ideological. And as I said, first, sovereign, second, socialist, third, secular, fourth, democratic, fifth, republic. Then, 6th, justice, 7th, liberty, 8th, equality, and 9th, fraternity. These are the 9 foundational aspects of our preamble, and in our previous class we discussed with you sovereign, हमने आपसे डिस्कस किया है, सोशलिस्ट डिस्कस किया है, सेकुलर डिस्कस किया है. Now we come to democratic, the 4th salient ideological premise of our constitution. So friends, democratic the basic concept of democracy has been derived from that world famous speech of Abraham Lincoln, popularly known as the Gettysburg Address. In the Gettysburg Address, delivered during the course of the American Civil War in 1862,
Abraham Lincoln gave that standard definition of democracy, which is the most popular and widely accepted even today, that this government of the people, by the people, and for the people shall not vanish from the face of the earth. So democracy में Gettysburg Address से standard definition है. Gettysburg Address of Abraham Lincoln. Delivered during 1862 in the course of the American Civil War. और इसमें उन्होंने कहा था कि that this government of the people, by the people and for the people, government of the people, by the people, and for the people, shall not vanish from the face of the earth. So this standard definition of Abraham Lincoln rendered in his Gettysburg Address stands as the most widely accepted definition of democracy today. Friends, going further, we now take into consideration the concept of republic. Now, republic, is a form of governance wherein which the head of the government is elected by the people. He is not a monarchical head. He is not a hereditary head. He is not the head of an oligarchy. He is not the head of a plutocracy. He is the elected head of the state by the people. अब हम समझा रहे हैं ये क्या होता है. Republic. When the head of the state is elected directly by the people. Directly by the people. Yeah. Friends, India, for example, is a democracy. Great Britain is also a democracy. But India is a republic because the president of India is elected by the people. Great Britain is not a republic because the head of the state, that is the king of Great Britain, is a hereditary monarch. So you do understand the difference. Both are democracies. तो ये जरूरी नहीं
कि जो कंट्री डेमोक्रेसी हो वो रिपब्लिकन हो, ठीक है। हाँ, लेकिन जो रिपब्लिकन है वो डेमोक्रेसी होना ही होना है। तो जहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट, हमने एग्जांपल बता दिया ना, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, ग्रेट ब्रिटेन इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, बोथ फॉलो द सेम वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लेकिन इंडिया रिपब्लिक है, ग्रेट ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन मोनार्की है। फर्क समझ गए? नाउ वी कम टू द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर प्रियम्बल, एंड दैट इज द justice. Justice, social, economic, and political. That means no citizen of the country can be deprived or put at a disadvantage vis-a-vis law, institutions, or anything that affects his governance, livelihood, and his duties and role as a citizen of the state. हर जगह उसको एक न्याय होना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ से कॉन्सेप्ट आया है, रूल ऑफ लॉ। एक बात बताओ बेटा, तुम एबीडाइसी का नाम कहां से सुने हो? यार ये लड़का बहुत तेज है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, नहीं, नो सॉरी, आई एम प्राउड ऑफ यू सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। एबीडाइसी, यू नो, a great constitutional expert. बैठिए बैठिए बैठिए, ठीक है। सर आइवर जेनिंग्स, एवी डाइसी, हार्टफोर्ड बटलर, दे आर ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। हाँ, वेरी वेल सेड, है ना। एवी डाइसी, यू आर अ ब्राइट बॉय। हाँ, एवी डाइसी, ठीक है। तो ये देखिए वहां से आया है। और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये आपका राइट टू इक्वालिटी में है संविधान में। इसके बाद आर्टिकल 38 में है, आर्टिकल 39 में है ना। द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी शैल बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सबसर्व द कॉमन गुड, आर्टिकल 38 में है, टू में, दैट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम shall so operate that justice, social, economic and political shall permeate all forms of life. तो देखिए ये चीज आपको संविधान में कई जगह मिलेगा, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स, सो परवेसिव इज दिस राइट कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, तो इसी आधार पे कैंसिल किया। हाँ, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17 एंड 18। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको आर्टिकल्स 37, 38 एंड 39, और भी आर्टिकल्स में है, लेकिन इसमें तो बहुत क्लियरली मिलता है।
right? Then we come to the seventh important aspects of your preamble, ideological concepts of your preamble, that is liberty. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. ठीक है? Equality, आठवां इक्वालिटी, of opportunities and of privileges and to promote among them all. Them all. नौवां, फ्रेटर्निटी, भाईचारा. Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Of the nation. ठीक है, ये 9 कॉन्सेप्ट्स हैं. अब ये तीनों मैंने लास्ट में इसलिए टेकअप किया कि दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये केयरफुल रहिएगा. डिक्लेरेशन ऑफ, ये तीनों वहीं से लिया गया है, ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन फ्रेंच रेवोल्यूशन. अच्छा, फॉर योर इंटरेस्ट ये बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है. जो पूना पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी, तो वर्बैटिम ये तीनों कॉन्सेप्ट पूना पैक्ट में भी इंक्लूड किए गए थे. देखिए, आजकल जो कॉम्पिटिशन्स का ट्रेंड ये है कि अब वो साधारण क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो घुस घुस के कंसेप्चुअलाइज करके क्वेश्चंस पूछते हैं. ये दिमाग में रखिएगा. हाँ, इंक्लूडेड इन द पूना पैक्ट (1932) between Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar.
Now friends, as far as the structural aspects of the preamble are concerned, who designed it, who decorated it, who wrote its calligraphy, ये हम आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं और YouTube से वो क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ डिबेट, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल। In 1960, a very famous case came before the Supreme Court of India. Beruberi case. Now, this Beruberi was an enclave. जब इंडिया पाकिस्तान का रेट्रिफ लाइन डिमार्केशन हुआ, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, तो रेट्रिफ लाइन के डिमार्केशन का जो प्राइमरी क्राइटेरियन था वो ये था कि जो हिंदू बाहुल्य इलाके होंगे वो हिंदुस्तान में जाएंगे और जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके होंगे वो पाकिस्तान में जाएंगे। सो islands of population were created on the borders of both countries, which territorially lay in Pakistan or India, but had the reverse demographic mix. जैसे कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके थे जो कि हिंदू बाहुल्य थे और ये they were contiguous with the border, the रेट्रिफ लाइन डिमार्केशन, ठीक है। इंडिया में कुछ ऐसे इलाके थे जो कि मुस्लिम बाहुल्य थे, ठीक है। तो बहुत से इलाके थे पाकिस्तान में भी इंडिया में भी ऐसे करके। अब हुआ क्या कि 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हो रहा था तो उस समय सरकार ने सोचा कि इस लफड़े को सलटा ही दिया जाए। तो जो हिंदू बाहुल्य एनक्लेव्स हैं पाकिस्तान में उसको इंडिया में लौटाने की बात हुई और जो मुस्लिम बाहुल्य एनक्लेव्स हैं इंडिया में उनको पाकिस्तान में लौटाने की बात हुई। ऐसा ही एक एनक्लेव वेस्ट बंगाल में बारूबेरी था, तो इसको बांग्लादेश को देने की, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, उसको देने की बात चली। अब बीसी रॉय साहब की सरकार थी, विधान चंद्र रॉय जानते ही है, फादर ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना, कहते थे बनाना डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एंड विधान चंद्र रॉय इज द ओनली पर्सन इन इंडियन हिस्ट्री टू हैव क्लियर्ड द FRCS and MRCP both examinations only within a single year. One of the greatest surgeons and physicians India has ever produced. He went on to become the first Chief Minister of West Bengal और वो भारत में संभवतः कुछ ही चीफ मिनिस्टर थे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जवाहर कहा करते थे। So titanic was his stature, है ना। तो विधान चंद्र रॉय ने ऑब्जेक्ट किया, नथिंग डूइंग, केस गया सुप्रीम कोर्ट में। अब भारत सरकार इसलिए डिसीजन लेती, केयरफुल इस चीज को समझिए, क्योंकि जो सॉवरेनिटी का पावर देता है प्रियम्बल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार कह रही थी कि हम सॉवरेन हैं,
हम दे सकते हैं बेरू बेरी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि नो, द पावर ऑफ सॉवरेनिटी as bestowed upon the government of India in the preamble does not include the power to secede territories. इस सॉवरेनिटी का पावर आपको यह अधिकार नहीं देता है कि आप टेरिटरी सेसीड कर दीजिए। सेकेंड चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द गवर्नमेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 3 to alter the boundary of any state does not include the power to secede territories. बाउंड्री को ऑल्टर करना है, लेकिन ऑल्टर करने का मतलब ये नहीं कि देश के भूभाग को आप किसी विदेशी को दे दें। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इन बेरू बेरी केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड आउट that preamble is not an essential and not an integral part of the constitution. The Supreme Court ruled that the preamble is not an integral part of our constitution. And A, the sovereign power bestowed upon the government of India under the preamble does not include the power to secede territories. Bestow मतलब give. ठीक है। B, Article 3 of the Constitution gives the government the power only to alter the boundaries of a state and not to secede territories. ठीक है ना। So it gives the power to only to alter the boundaries of the state and not to secede territories. तो बेरुबारी केस में साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि the preamble is not an integral part of the constitution. लेकिन क्या हुआ कि 1973 the Keshwanand Bharati versus the state of Kerala case came before the Supreme Court.
1963 केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला. This case came before the Supreme Court. अब इस केस की पृष्ठभूमि बहुत ही खतरनाक थी. This is a very, very famous case. I'll be talking to you about it. इसके पहले in the Golaknath versus the state of Punjab case, the Union government had lost the case before the Supreme Court when the Chief Justice of the Supreme Court was Justice Ken Subbarao, and Nani Palkiwala contested against the Government of India, and the Government of India had lost that case. After losing the Keswanand Bharti, Golaknath versus the state of Punjab case, Mrs. Indira Gandhi's government, she had come back to power by a brute 2/3 majority in the 1971 elections. So she carried out the 24th Constitutional Amendment Act. ये 24th Constitutional Amendment Act ने आर्टिकल 368 के अधीन क्लॉज 4 ऐड कर दिया, जो कि ये कहता है कि पार्लियामेंट इन इट्स कंस्टिट्यूएंट पावर्स हैज द राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है. बेसिकली ये राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था. तो ये केशवानंद भारती केस, it was its basic brief, its basic motive was to examine the constitutional validity of the 24th Constitutional Amendment Act. और ये क्या है 24th Constitutional Amendment Act, मैंने अभी आपको बता दिया है ना. To examine the constitutional validity of the 24th Constitutional Amendment Act. अब इंदिरा जी जानती थी कि अगर ये केस वो हार गई तो फिर सरकार को रिजाइन करना ही करना पड़ेगा. और विडंबना ये थी कि चीफ जस्टिस होने के दौर में जो तीनों सीनियर मोस्ट जजेस थे, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस शेलेट, इन तीनों ने गोरखनाथ केस में इंदिरा जी के खिलाफ जजमेंट दिया था, भारत सरकार के खिलाफ. अब सरकार जानती थी कि सीनियरिटी के हिसाब से यही तीनों चीफ जस्टिस होने वाले हैं. और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर होता है, ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर. मास्टर ऑफ द रोस्टर पावर के अधीन चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस को ही अधिकार होता है कि किस मुकदमे में कौन सी बेंच बनेगी. ये अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को होता है. इंदिरा जी जानती थी कि इन तीनों में कोई चीफ जस्टिस हो गया तो अपने विचारधारा के जजेस से पूरे बेंच को पैक कर देगा और सरकार मुकदमा हार जाएगी. तो इंदिरा गांधी, in a brazen exhibition of power arrogance,
उन्होंने, और तब ये आपका जो है ये सिस्टम नहीं था कॉलेजिएट सिस्टम, तब लॉ मिनिस्ट्री ही रिकमेंड करती थी प्रेसिडेंट को कौन चीफ जस्टिस होगा। तो उन्होंने अजीत नाथ रे का नाम इन तीनों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बना दिया। और अजीत नाथ रे का चीफ जस्टिस होने का मतलब कि तीनों ने रिजाइन कर दिया, बस मैडम गांधी काम बन गया। अजीत नाथ रे वॉज हर रबर स्टैम्प। फिलहाल इस केशवानंद भारती केस के पहले इस केस में इंदिरा जी ने पूरा पृष्ठभूमि तैयार कर लिया कि हमको मुकदमा जीतना है। एंड दिस इज द केस in which the biggest bench of the Supreme Court has been constituted. 13 judge bench था ये, है ना, the biggest bench of the Supreme Court. Supreme Court. थर्टीन जज बेंच। ठीक है, अ 13 जज बेंच वॉज कंस्टिट्यूटेड। और इस केस में बाय अ वेफर थिन मेजोरिटी कहा जाता है, 7:6 जजमेंट था वो। इट वॉज अ डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ 7:6। और इसमें तो बहुत सी चीजें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जजमेंट्स इन इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री। लेकिन प्रियम्बल के संदर्भ में इस केस में दो चीजें कही गई। पहली बात ये कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा होगा जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट चेंज। बेसिक स्ट्रक्चर, नो फंडामेंटल राइट्स। बहुत सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, फंडामेंटल राइट्स भी एक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। और दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में, दैट द प्रियम्बल कैन बी assumed to be, can be assumed to be the basic structure of the constitution. अभी भी एक डेफिनेटिव क्लॉज नहीं आया है ना। इन द केशवानंद भारती केस, the preamble outlined two things. Very sorry. The Supreme Court outlined A, that the basic structure in any constitutional amendment under Article 368, the basic structure of the constitution should not be changed. In any constitutional amendment under Article 368, the basic structure of the Constitution cannot be changed.
और दूसरा, द प्रियम्बल may be assumed to be the basic structure. लेकिन प्रियम्बल संविधान का एक अभिन्न अंग है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर नहीं किया इस केस में. In the 1980 Minerva Mills versus the Union of India case, the Supreme Court categorically said that the preamble is the integral part of the Constitution. So it changed its stance of the Beruberi case, है ना? तो in 1980 Minerva Mills versus the Union of India case, the Supreme Court clearly stated that the preamble is the integral part of the Constitution. ये किस केस में है? तो मान लीजिए कि केशवानंद भारती ऑप्शन है तो प्लीज टिक कर दीजिएगा, या आपका मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है तो भी टिक कर दीजिएगा. ठीक है, कोई मूर्ख एग्जामिनर ही दोनों ऑप्शन देगा, ठीक है ना? नहीं देगा, ये नहीं होता है. हाँ, the Supreme Court clearly stated that the preamble is the basic structure of the Constitution. Oh, sorry, is the integral part of the Constitution. A position the court reiterated मतलब फिर से वही कहना, reiterated in the famous case LIC versus the Union of India. (1995) इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, now the last important point which I have to tell you in this regard is that the preamble has been amended only once. As tak in the history of independent India, the preamble has been amended only once. By the 42nd Constitutional Amendment Act, the words socialist and secular were incorporated into the preamble. और दूसरी बात कि इक्वालिटी नहीं, fraternity assuring the dignity of the individual ये पहले था, लेकिन and the unity and integrity of the nation ये बाद में जोड़ा गया 42nd Constitutional Amendment Act से. तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जानना है. The preamble has been amended
only once by the 42nd Constitutional Amendment Act (1976). ठीक है, two changes were made in it. In the preamble. First, the words socialist and secular were added to the preamble. And second, the clause, the unity and integrity of the country, was added along with fraternity. Concept of fraternity, ये दो चीजें जोड़ी गई थी. Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the country. तो fraternity assuring the dignity of the individual ये तो पहले से था, लेकिन the unity and integrity of the country was added after the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. ठीक है, so this in itself summarizes before you the philosophy of the preamble. Now, friends, that finishes our sources of the Constitution, the features of the Constitution, and the preamble of the Constitution. In our next class, we will be dealing with the committees that were instrumental in framing the Constitution, what was their philosophy and outlook, and the parts of the Constitution and the schedules of the Constitution. And then we will be coming to fundamental rights. As I told you, in 30 questions, 30 sessions, I'll be clearing out the entire gamut of what is important for you in your JPSC examination. कोई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ही संभवतः उसके बाहर से आएगा. ठीक है ना? तो with this, I thank you for the class. Have a nice time. Thank you. Goodbye.